Hello everyone, this is Vishakha Thakur coming up with next round of current affairs. So let's start with first COVID and political news. So like first in the series is the COVID related news. And in the COVID, this section, the center has placed the first fresh order for the 44 crore COVID-19 vaccine doses. Now let's just understand that not just from like it's not from exam perspective, but like for our daily needs, because you must be thinking about getting yourself jabbed, but like vaccine availability is an issue. Now to like and we have like seen that in detail. What happened earlier was ki, we needed almost 1.7 billion doses, but our capacity is currently only 70 million per month if we take both Covaxin and Covishield together. दोनों मिला के भी इतनी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, which has created scenario for we have vaccine shortage and more people are wanting to get vaccinated. Now what government has done in that case is various state government were asking center to actually bargain on behalf of all the center because it has greater bargaining power. And why it has greater bargaining power, in the yesterday's videos I explained in detail. So already हमारे पास वो understanding है. Now let's just move ahead कि like what this has in news for us. The news says कि center ने कम से कम 44 crore new vaccine doses like it has placed order for, and 30 crore doses it will take from the Hyderabad based biological E for its protein subunit vaccine. So 44 करोड़ तो आपके यहाँ पे हो गए 44 करोड़ और 30 करोड़ यहाँ से आ गए. All together 17 crore doses India India will be able to procure, but that will be August onwards. That means you're not getting this right now. आपको कम से कम जून इंटायर और जुलाई इंटायर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अगस्त में आपको वैक्सीन डोजेस मिलेंगे. That means that required a wait period of at least 2 months. Now until then 53 crore vaccine doses including 23.5 crore already administered ki till don't worry ki till July mein hi itne sare orders aayenge. What will we do before that? Like there is no need to apparently government says there is no need to worry, because until July 53 crore vaccine doses it will be able to get from the Serum Institute of India and Bharat Biotech, including 53 करोड़ जो डोजेस होंगे उसमें से 23.5 करोड़ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, एंड बाकी इट विल बी एबल टू गेट फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो ओवरऑल इट मीन्स कि 125 करोड़ डोजेस वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन द अपकमिंग मंथ्स. तो 127 करोड़ डोजेस विल बी एबल टू प्रोड्यूस इन द अपकमिंग मंथ. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप इसका आधा करके दे लीजिए कि इतने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे. Okay, so this is a good news to hear. More vaccination means economy will again start running, though not exactly on the normal norm, but somewhere at the level where we can manage. Next is Nepal has stopped the distribution of Patanjali coronal kit. Now what is there in for us? You must be asking कि इसमें क्या exam perspective है. Let's first understand कि Nepal has coronal is manufacture our so famous Patanjali. हमारे बाबा रामदेव जी बनाते हैं इसको, और it was example of a soft power. To be अगर positive notes में देखा जाए तो it was example of soft power. You know how India was selling its yogic medicine and Ayurveda to other part of the country and was making revenue out of it, and was it helped in establishing even good relationship, India Nepal relationship. But what has happened is Nepal when said no, no, we don't want coronal kits, and the reason is said that procedure were not followed in procuring. What exactly happening is what Indians are interpreting is that it will lead the Madhesi political families from the Indian group. It may lead to de-link, so they are trying to de-alienate. अब नेपाल की हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है. नेपाल में क्या है, इन द इंटायर नेपाल पॉपुलेशन यू कैन डिवाइड दैम इनटू द हिल पीपल and the plain people who lives in plain. Now people who live in plain have better relationship with India, and they have pro India their view. The view is pro India, because of which we even Indian government favors ki people in the plain are happy with India because they already are, and we can capitalize on entire good view they have about us. So we want to capitalize it.
but the hill people do not have such, they do not share the same kind of like sympathy for India, or same kind of, like goodwill for India. So in that manner, what happened is, like, Madhesi is one of those plain living people. Madhesi is one of those plain living people who have good link with India. Now this move is being interpreted as that, this is leading to alienation of Madhesis from India, like their political family. So this will impact India Nepal relationship and India's soft power status both. So at one end, this is impacting India Nepal relationship because of Madhesi delinking. Again, India's soft power status, because we were selling Ayurveda, and in that entire process we were like maintaining India's soft power, right? So two way you can write this. So this has like, for India it was this. Now there is a good, as I said, every day I try to bring one thing for your ethics, like good case study which you can quote as an example, क्योंकि नेगेटिव एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, आप करप्शन के कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं. पॉजिटिव एग्जाम्पल समटाइम वी हैव दैट ऑफ. सो द पॉजिटिव एग्जाम्पल इज in Arunachal Pradesh, in order to boost vaccination, the circle officers are actually offering free rice. So like if you're like going to get yourself jabbed, then in return you'll get rice. So what a good incentive it is, like for poor people to get vaccinated. Because earlier, though like it is, but sometimes it is difficult to explain people, like it's saving your life, they are not getting this, it's saving your life. So now maybe ration may work. So it is a very good example. आप इसको डाल सकते हैं in terms of behavioral change, like behavioral change, as I like some time ago I talked about, how in terms of persuading people, 3 things works: logos, Legos, ethos and pathos. How like you can play with people's emotions. Here logic is working in here. Why? Because there is a reward and punishment mechanism. In order to get सब like कुछ कराने के लिए आपने कुछ reward set कर दिया है in order to bring some behavioral change. तो आप कुछ behavioral change लाने के लिए आपने कुछ reward set कर दिया है. So this is a very good example, and this news can be seen in this light. Now let's move ahead, see some political news. In the political news section is that there is President Ramnath Kovind has appointed a new election commissioner, that is Anup Chandra Pandey. Now don't confuse election commissioner with chief election commissioner. It is actually election commissioner who is being appointed, and both have different like designation, and there is some variation which I'll talk like in later. Now article, like to understand here is what you need to know is article 324(2) clause 2 provide for the appointment of election commissioner and chief election commissioner by the president. So these questions are often asked, who appoint who? Like if I frame a question, who appoints speaker? Does speaker appoint, does president appoint speaker? Then no, president does not appoint speaker. President though appoint pro tem speaker, who is which is a temporary position, but not speaker. Speaker is actually elected by the house. So like you are supposed to be aware on these basic terms. If you know this, like so keep reading the news. Some news may actually hit your brain. I was reading it like this, so this may come to you. So like in terms of this, like remember that president appoints as election commissioner and chief election commissioner. Now let's understand something, like let's understand in detail what Election Commission of India is, what it does, what are its power and function, and how does it maintain its autonomy. To understand that, Election Commission of India was established in 1950. In 1950 it was established under article, and in the entire provision of Election Commission are in part 15 of the Constitution, from article 324 to 329, which deals with the election. Now, Article 324 provides that in the superintendence, direction and control of the election would be with the Election Commission of India. So, ये ECI की पूरी duties है कि वो देखे superintendence, direction और पूरा control देखना उस पूरा mechanism का, वो Election Commission of India क्या होता है. But here there is a catch. Over what election does Election Commission of India have jurisdiction? इट इज़ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट. जब आपके MLA MPs जब आपके इलेक्ट होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों, इंक्लूडिंग बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, चाहे राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है. सेकेंड इज स्टेट लेजिस्लेचर. State legislatures are also appointed, also elected, like Election Commission of India conduct the election for them. And also for the post of president and vice president, like election takes place for that, and Election Commission of India oversee the entire election process.
But that does not mean even the election to panchayat and municipalities is also being taken by the Election Commission of India. No, that is being overseen by the state election commissioner. Like state election commission is responsible for that duty. ये कैच है और इसको प्लीज आप ध्यान रखें. स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन के लिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होता. Now, what are the other function? Other functions are preparation of electoral roll. इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर करता है. इनको याद रखें कि इलेक्शन के सिवा बाकी रोल क्या होते हैं. इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर करना, अवेयरनेस फैलाना इलेक्शन के लिए, रिजॉल्विंग द इलेक्शन डिस्प्यूट. लाइक रिसेंटली तमिलनाडु में वेरियस पार्टी वॉज फाइटिंग ओवर द पार्टी सिंबल एंड इट वॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ओवरसॉ द इलेक्शन डिस्प्यूट. सो लाइक इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द इलेक्शन डिस्प्यूट. इनफैक्ट आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरा जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल फंक्शन होते हैं. तो जुडिशियल फंक्शन में एक फंक्शन आपका ये आता है इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में बोलना. इनफैक्ट वेन एवर एन MP और MLA इज बिंग डिस्क्वालिफाइड, तो वो जो रिकमेंडेशन जो जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है और प्रेसिडेंट बेसिकली उनको रिमूव कर देता है, बट उसके लिए रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है. एंड दैट रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग माई फ्रेंड्स. सो डू रिमेंबर दिस, दैट रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग. तो ये इसके जुडिशियल फंक्शन हो जाते हैं. दैट इज रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट, रिकमेंडिंग ऑन दी लाइक व्हेन प्रेसिडेंट इज रिमूविंग द MP and MLA on misconduct or whatever the reason is. Then assigning the party symbol, that is also its judicial function. Then registering the political party and giving them the status of a registered party or national status is also being taken care by the Election Commission of India. Now let's move ahead. Let's see the composition of Election Commission. Now Election Commission actually consists of Chief Election Commission and such number of members like Election Commissioner that are being fixed by the President from time to time. So it is on the President कि कितने Chief Election Commissioner होने चाहिए और कितने like Election Commissioner होंगे. तो Chief Election Commissioner तो एक ही होता है, but Election Commissioner की जो नंबर है वो बदल सकते हैं. And in fact in 1989 it was a single member body. सिर्फ Chief Election Commissioner अकेले बैठ के ये सारा प्रोसेस देखता था. बट फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड एंड टू इलेक्शन कमिश्नर वर एडेड टू द बॉडी. नाउ इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें 3 लोग होते हैं. 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है. ऑल्सो लाइक रीजनल कमिश्नर मे बी अपॉइंटेड अगर फॉर दी कंडक्टिंग इलेक्शन. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि रीजनल कमिश्नर की ज़रूरत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी दैट. Now all matters are decided by majority among its member. अगर by the way अब 3 मेंबर हो गए, 3 मेंबर बॉडी है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि whether this decision is right or not, because election commission of India has to decide election schedule. It also decide whether election is to be conducted or not. Sometime in event of national emergency, like emergency function होते हैं ये इसके क्या नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के. इन इवेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इलेक्शन कमिश्नर like can decide whether to conduct election or not. Then it is like how it will be decided. What if 2 members disagree to it? Then it will not happen because decision is taken by the majority. Here your chief election commissioner does not have veto. Instead it works on the principle of majority. So this is very important here that it works on the principle of majority. Now let's move ahead. Next is the condition of service. In terms of condition of service, the tenure is determined by the president. The condition of service and tenure आपका president determine करता है, and it goes unsaid that it cannot be changed after appointment to like which can hurt them in any ways. तो उनके अपॉइंट होने के बाद उनको हर्ट करे इस तरीके की प्लीज changes are not allowed. Next, but in terms of status and salary and allowances दोनों सबके बराबर होते हैं CEC और इलेक्शन कमिश्नर के. But here is a catch. There is difference in the process of removal of the chief election commissioner and the election commissioner. In case of chief election commissioner, he is being appointed by the manner. अब देखेंगे chief election commissioner can only be removed from his office on the ground as judge of Supreme Court. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे how a judge of Supreme Court is removed, but he can only be removed in a manner and judge of Supreme Court, which is like जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हो इस तरीके की मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट, इन ऑर्डर टू रिमूव अ जज.
but election commissioner does not have same kind of protection. He can be removed by the president on on recommendation और on advice of the CEC. मतलब CEC से थोड़ा consult करना है, ऐसा नहीं है कि उसके advice भी binding है इस case में, but they are not given same kind of protection which is being given to CEC, and that is one of the criticism of the election commission of India कि election commissioner are not being given the same kind of protection which the chief election commissioner is being given. Okay, so this you must have understood कि difference क्या है. मैंने कहा था ना there is a difference and I'll talk about this. It is this difference I'm talking about and this is a major criticism. आपको धीरे धीरे criticism समझ में आते रहेंगे. पहला criticism ये है कि इनके पास ये नहीं है, बाकी और दो criticism और हैं. I'll discuss them in detail but you remember this. मैं आगे जाके उनसे criticism के बारे में बात करेंगे. Next is security of tenure. They are provided that they hold the office till the term of 6 year or till the age of 65 year, जो कि एक UPSC member जैसा ही होता है कि they can hold the office till 6 year or till 65 year, whichever is earlier, and they resign by giving the resignation to president. So this was so far election commission of India. आप यहाँ पे समझ गए. अब हम बात करते हैं process of removal. As I said, the process of removal was like that of removal of judge of Supreme Court. तो आप curiosity तो होगी ना कि judge of Supreme Court को कैसे remove करते हैं. Now a judge of Supreme Court can be removed on the ground of proved misbehavior in incapacity. तो पहले तो आप ground समझ गए, ठीक है. आप क्या समझेंगे? Procedure. Ground तो समझ गए ना, अब क्या समझेंगे? प्रोसीजर. सो कीप आस्किंग क्वेश्चन. आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को हटाइए. कीप आस्किंग क्वेश्चन योरसेल्फ एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चन you'd have a curiosity in reading. So he can be removed on the ground of misbehavior incapacity, but process क्या है? The process requires special majority of 2/3 of the member present and voting. और आपने अगर देखा हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस चाहिए होता है. 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. अब आप बोलेंगे 2 नंबर कैसे? 2/3 चाहिए, 50% चाहिए. इसका मतलब ये है, अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर बाय द वे वैसे तो 545 है, 545 है, याद रखिएगा 545 स्ट्रेंथ है लोकसभा की. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल आपको सिंपली समझाने के लिए. अगर 500 मेंबर हैं हमारे उसमें अगर लोकसभा में, तो कम से कम 50% तो आपका मतलब 50% तो एग्री करें ही, मतलब 250 को तो एग्री करना ही है. बट दैट डज नॉट मीन कि 250 पे ही मतलब वो पास हो जाएगा. 2/3 मतलब 50% तो होना ही चाहिए और 2/3 मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए. अब आप इसका 2/3 निकालेंगे, 2/3 × 500 जब आप करके निकालेंगे तो ये भी प्रेजेंट आपके मतलब दे शुड एग्री. अब दो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में कैसे आएगा? इट इज़ लाइक दिस. व्हाट इफ इस समय प्रेजेंट ही आपके 100 मेंबर्स हो, राइट ना? क्वारम तो 1/10 से भी बन जाता है. अगर प्रेजेंट ही आपके 100 मेंबर हुए तो इसके 2/3 2/3 300 मेंबर, तो इसके 2/3 तो सिर्फ आपके मतलब ये यहाँ से आपके 100 × 2 आपका प्रॉपरली 200 से ही काम चल जाएगा. अगर सिर्फ किसी दिन हाउस में सिर्फ 300 मेंबर आते हैं, 2/3 तो 200 मेंबर से आपका क्या होगा? पास हो जाएगा. आप आसानी से आप अपने जज को या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो. अगर उस दिन प्रेजेंट ही 300 लोग हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज दोनों मेजॉरिटी फुलफिल होनी चाहिए. 2/3 वाली तो हो ही, साथ में 50% मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. यहाँ पे ये नंबर आता है टोटल स्ट्रेंथ. टोटल स्ट्रेंथ तो ये होती है ना, वो जो असाइन स्ट्रेंथ है दैट इज़ 500 विच इज़ एग्जैक्टली 545. वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ. टोटल स्ट्रेंथ का 250 होना ही चाहिए और साथ में जो उस दिन प्रेजेंट है. तो ये डिफरेंस है. आपकी जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545 होती है और उस दिन कितने प्रेजेंट है ये वेरी करता रहता है. कभी 200 प्रेजेंट है, कभी 300 प्रेजेंट है, कभी 400 प्रेजेंट है. तो जितने प्रेजेंट हैं उनके तो 2/3 एग्री करें. ओवरऑल ये भी चाहिए कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ असाइन की गई है हाउस को, जो 545 है, उसके भी 2/3 मेंबर्स वहाँ पे एग्री करने चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्योंकि दिस अंडरस्टैंडिंग दिस मेजॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी आती है, राइट? ओके, सो आई होप यू हैव गॉट दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. Constitution does not use the word impeachment. Please keep in mind impeachment word is used for the president and which require
even more tough, like it requires even tough process to remove a president. That's why it's called impeachment, and it requires special majority of 2/3 of the total strength. यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला केस नहीं है, यहाँ पे सीधा इसका ही 2/3 होना चाहिए, मतलब 250 प्लस समथिंग होने ही चाहिए, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कोई केस है ही नहीं. So this, like, to remove a president is the toughest process in the constitution of India. So he's been given the maximum possible safeguard that can be available to a person. Now on the basis of this, अब आप जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए. Consider the following statement with respect to Election Commission of India. अब देखिए ज़रा, the term of office of Election Commissioner is same as the chairman of UPSC, and I talked about this, 6 year or 65 age, whichever is earlier. So this statement is right. That means जहाँ पे 1 नहीं उनको काट दो, इन तीनों में 1 है, so A, C और D की possibility है. Now in case of difference of opinion among the chief election commissioner, the matter is referred to the president. क्या ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर अपने हर मैटर के लिए प्रेसिडेंट के पास चल दें? इवन इफ यू डोंट नो दैट आई हैव डिस्कस दिस इन लाइक प्रीवियसली, क्या चाहिए होती है? मेजॉरिटी चाहिए होती है. मैटर प्रेसिडेंट को रेफर नहीं करना होता, मेजॉरिटी चाहिए होती है. इवन इफ यू डोंट नो, ज़रा एक बार लॉजिक लगा के सोचो, अगर किसी को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में डेली प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, जब प्रेसिडेंट के पास इन अथॉरिटी है भी नहीं, इज़ अ नॉमिनल पर्सन, इज इट रियली डज इट मेक कॉमन सेंस? सो आप 2 को ना थोड़ा डाउटफुल रखो. तो 2 को अगर हटाना शुरू करेंगे तो ये गया, ऑल द अबव भी गया, और बेसिकली आपका 1 और 3 बच रहा है. तो अब बस आपको 3 चेक करना है. द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन commission and its insulation from executive interference is ensured by the special provision under Article 324 of the Constitution of India. अब ये तो हमने देखा, Article 324 में दे रखा है. That means your statement C is right. That means 1 and 3 is right. And with this, we are done with today's political current affairs. I hope like you have a good take out of it, and I hope you're healthy and happy at your home. And to get more from this current affairs, stay connected to us, stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to ACube IAS.